call co-op. It's what we do. नमस्कार, मैं मधु चौरसिया। स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है नारी तू नारायणी। और आज का विषय बहुत ख़ास है जिसमें कि पॉलिटिक्स में वुमेन्स किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं यूके में रहते हुए। तो चलिए मिलवाते हैं आज के ख़ास मेहमान से। आज हमारे साथ जुड़ी हैं अंजना पटेल और परवीन रानी, जो कि यहाँ पर काउंसलर के रूप में काम कर रही हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाई हैं। भारत से बाहर निकल कर विदेश की भूमि पर अपनी अलग पहचान बनाना इतना आसान तो नहीं, पर अंजना पटेल और परवीन रानी ने ये कर दिखाया है। तो सबसे पहले स्वागत है अंजना जी आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, और परवीन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले अंजना जी से जानना चाहूँगी आपकी ये जर्नी के बारे में। आप अपने बारे में हमें विस्तार से बताएं, अपनी जर्नी के बारे में आप हमें विस्तार से बताएं अंजना जी। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एमए टीवी के, और थैंक यू मधु जी जो आपने मुझे यहाँ आज इनवाइट किया। तो मैं अपनी जर्नी शुरू करती हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में बोलूँगी अगर आप माइंड ना करें तो। बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दार एस सलाम, Tanzania, and lived there and then moved to India for 5 years. So I have lived in a very small village where water and electricity was not 24 hours. So I have also seen a life in India, and then came to here in 1975. The life wasn't as simple and as easy as it is at the moment when we came here. And then after a year we came here because my father had passed away, and he only lived here in this country for 7 days. And after that my mother, my 2 sisters and my brother, we all came after 3 weeks and did his funeral. So you can imagine coming here with only like 12 pounds and then living our life, living with relatives and then finding our own place to live, and all that wasn't very easy. So I did any other job, but then I was studying for BCom, so I always wanted to be in a financial institution. So I found a job in a bank in 1976, and so that's how the journey started. It wasn't easy again. Started at a very low level in the bank, but I did reach my goal, which I had set for myself, because I've always been like that, that I set goals for my life. Got married in 81 and had 2 beautiful handsome boys, and then obviously marriage didn't work, so I was divorced, and so I brought up my 2 children on my own, and I'm very proud of them. They've done really well for themselves, and I live with my mother and look after her, and I've got 4 beautiful grandchildren. They are really lovely, and that's how life is at the moment. But when I was working for a bank, I saw a lot of injustice which happened, that you don't get your promotion but other people do. By the way, I had to struggle in life. I had to fight for everything that I have got today. So I'm not one of those people who actually got easily things in life. And then came a time in 2002 where I again saw more injustice happening, and so said to myself, and there were other people who actually were supporting me and said that you must become a counselor, because I've always helped people in my own way. I always kind of gone with people who couldn't speak English to their hospital appointments, to their doctor's appointment, and done many things. I was also a school governor from 1998 is when I first became 1992 is when I first became a governor of a school. So I even saw there what was happening with the parents and how communication was a problem. So it was the parents who actually made sure that I became a governor. And then in 2002 there were a lot of people who said that I should do this in a proper manner, with a mandate. So I obviously stood again, same struggle. I got a staunch Labour seat, which I was given very easily by the Conservative Party, which I always believed in, because I believed in Margaret Thatcher. In my struggling days, I admired what Margaret Thatcher did, and I've always been inspired by her, so always have been a Conservative. So I joined the Conservative Party, and I stood in a staunch Labour ward in 2002,
and to everyone's surprise, because I had blessings from my guru, the two people that I really believe in is God and my guru, and my mother, who actually is like my backbone. We say that every successful man there is a woman, but I would say behind my success it is my mother who's behind me. So with my guru's blessings and my mother's blessings and my children's hard work and my sister's hard work, I got in, and it surprised everyone that I actually got in and became a counsellor in 2002. And then journey began from there. And in 2006 we took control of the council, and I was a portfolio holder for community cohesion and schools and children's development. Then we lost control of the council in 2010. We gained control again in 2022. So at the moment I am a portfolio holder, cabinet member for environment and community safety in Harrow. So that very quickly, that's my journey. But my journey is only successful because of my family, because of my children, because of my sister, because of all the people that believe in me and are still supporting me. So I'm really grateful and thankful to all those people who's actually been with me on my journey all the way. And my daughter-in-laws are now very supportive as well, that I've got them as well. So I'm adding more and more people to my support. So there we are. I've got two beautiful daughter-in-laws and 4 grandchildren. Thank you. या अब मैं प्रवीण के पास आती हूँ. प्रवीण, आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं. सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप अभी इलेक्ट होकर आई हैं, तो बहुत बधाई हो आपको. सो अब मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी. सबसे पहले तो सभी को नमस्ते. जितने भी सुनने वाले और देखने वाले श्रोता जुड़े हुए हैं, सबको मेरी तरफ से नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने ऐसे प्लेटफॉर्म पर आज हमें इनवाइट किया है. तो जैसे मेरा नाम प्रवीण रानी, आपने अभी मेरे नाम से बुलाया भी. आई फील दैट आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ मिला है, और जितने सपने देखे उससे कहीं ज़्यादा मिला है. और वी केम इन दिस कंट्री एज ए एंटरप्रेन्योर एंड गॉट सेटल्ड इन 2011. सो 2011 में हम लोग आए थे एज ए एंटरप्रेन्योर, और हायर एजुकेशन कॉलेज हमने रन किया. फिर गवर्नमेंट में हम रन करते थे, तो मैं साथ में मैं भी खुद करती थी. सो आई एम क्वालिफाइड टीचर इन दिस कंट्री एंड बैक होम इन इंडिया एज वेल, क्योंकि मेरी मदर भी टीचर थी. और कहते हैं ना कि आप अपने मदर के फुट स्टेप्स फॉलो करते हैं, आप अपनी माँ की परछाई होते हो. तो ये बिल्कुल सच साबित होता है मेरी लाइफ में, क्योंकि मेरी मम्मी भी टीचिंग सेक्टर में ही रही हैं और फादर मेरे आर्मी में थे. तो मेरी ज़िंदगी शुरू से ही बड़ी मज़े में रही है, आनंददायक रही है. नॉट लाइक मच स्ट्रगल आई हैव टू फेस इन लाइफ, बिकॉज आई गॉट वेरी सपोर्टिव फैमिली बैक होम इन इंडिया, मदर फादर. एंड आफ्टर मैरिज, शादी होने के बाद ससुराल में सास बहुत अच्छी मिली, और साथ में जेठानी, जिसे बोलते हैं सिस्टर इन लॉ. मोस्टली लोग कहते हैं कि जेठानी के साथ खटपट रहती है, बट मैं उस मामले में भी बहुत ही लकी हूँ कि मेरी इन लॉज में भी बहुत ही सपोर्टिव फैमिली है. मेरी जेठानी बिल्कुल बड़ी बहन की तरह मुझे हमेशा सपोर्टिवेट करती है, और उसको खुशी होती है अगर मुझे कुछ अचीव मैं कर पाती हूँ. तो ज़िंदगी के हर मोड़ पर परिवार का सपोर्ट मिला, ससुराल वालों का. फिर अब बच्चे बड़े हुए हैं, तो मेरे 2 बच्चे हैं. अभी कंपेनिंग में भी जैसे बड़े उत्साह के साथ उन्होंने डोर टू डोर नॉकिंग में, लीफलेटिंग में, कंपेनिंग में हमेशा साथ दिया, और शायद परिवार का सपोर्ट था, इसीलिए आज इस मुकाम तक पहुंच पाए. और खुशी की बात ये है कि साथ साथ बेटा भी न्यू इलेक्टेड काउंसलर बना है. तो अब काम मेरे लिए और भी आसान हो गया, क्योंकि आपको पता है ना, जो नई जनरेशन है आपके पास में, बिल्कुल जो नई जनरेशन है उनको हमारे से कहीं ज़्यादा नॉलेज है, और वो एक नए अंदाज से सोचते हैं और अपडेट रहते हैं हमारे से कहीं ज़्यादा, टेक्नोलॉजी से भी और हर चीज़ से. तो आज तक का जो सफ़र है, आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही आनंद में रहेगा, और लोगों को जहाँ भी हम जाते हैं सोसाइटी से उतना वेल कनेक्टेड रहते हैं, तो उनको हमारे काम भी पसंद आते हैं, और हम जो कमिटमेंट करते हैं भगवान की कृपा से वो निभा भी पाते हैं. और क्योंकि आपको पता है, इतनी सारी वोट देकर जब लोग आपको अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप उसे फुलफिल करें. बस वही एक्सपेक्टेशंस होती है. अगर आप उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करते हो, तो सब लोगों का फिर आपको प्यार, आशीर्वाद हमेशा मिलता है, और वही आपको आगे सफलता देने में हमेशा
हेल्प करता है। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। जी जी। नहीं, जैसे आप चुनकर आई हैं तो अभी हाल में आप इलेक्शन जीती हैं, तो बैक होम वहाँ पर क्या माहौल था? आपके जो पेरेंट्स हैं या आप जहाँ से बिलोंग करती हैं वहाँ किस, तो उन्होंने इंडियंस को संबोधित करते हुए कहा था कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जिन्होंने अच्छी पोजीशन हासिल कर रखी है, और उन्होंने इशारा किया था कमला हसन की तरफ कि मेरे पीछे भी कोई बैठी है। तो ये बहुत ही मज़ेदार रोचक मोमेंट था। आपको कैसा लगता है अब जब आप जीत कर आई हैं? देखो, पीछे बैक होम में भी बहुत ही खुशी का माहौल था, और न्यूज़ चैनल वाले भी ससुराल में भी गए और मायके में भी गए, उन्होंने काफ़ी कवरेज भी किया है, और पूरे इंडिया में सब लोगों ने देखा है कि किस तरह से मेरे घर में खुशी का माहौल था, ससुराल में भी और मायके में भी। और उनके जो मोटिवेशन जो वर्ड हैं वो मुझे और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, उत्साहित करते हैं। तो वो देख के मन करता है कि आगे हम कुछ और अच्छा करें, जिससे हम और भी इनको प्राउड फील करा सकें। कल को और भी इनको कोई कहे तो ये कहे कि हाँ भी परवीन उनकी बेटी है, उनकी बहू है और उनकी बहन है। तो ये सुन के हमें और भी मोटिवेशन मिलता है जी। तो यही चीज़ है कि हम वेल कनेक्टेड रहे हमेशा ही सोसाइटी से। कॉलेज टाइम से ही मुझे बड़ा शौक था सोसाइटी से जुड़े रहने का, उनको हेल्प करने का। तो एनसीसी और एनएसएस दो ऑप्शन दिए जाते थे, तो मैं हमेशा एनएसएस ही ज्वाइन करती थी, और मैंने एनएसएस ज्वाइन किया जो कि नेशनल सोशल सर्विस। और तभी से मेरा वो एक पैशन था कि लोगों की मदद करना, लोगों की हेल्प करना। और मैं हमेशा जो मतलब लेस प्रिविलेज्ड लोग थे वहाँ पर स्लम एरिया में जाके उनको पढ़ाना और उनको कढ़ाई बुनाई ये सब सिखाना और साफ सफाई करवाना उस एरिया में। तो ये सब चीज़ें कॉलेज टाइम से ही सीखना और वो करना, और आगे वही लाइफ में आपका पैशन बढ़ता चला गया। और काफ़ी, जैसे आपको कहते हैं ना, जब आप काम करते हो, आपके पेरेंट्स जब आपको उसकी सराहना करते हैं, और जैसे जैसे मेरे कामों को इंडिया गवर्नमेंट ने भी सराहा है, और काफ़ी मुझे इंडिया गवर्नमेंट से भी अवार्ड मिले हैं, यूके की भी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने मेरे कामों की प्रशंसा करते हुए काफ़ी अवार्ड मुझे मिले हैं। तो यही चीज़ें हैं कि आगे से आगे आप बढ़ते चले जाते हो इन चीज़ों का। बहुत आपकी लाइफ में एक संयोग रहता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन योर लाइफ इफ़ पीपल प्रेज एंड मोटिवेट यू। सो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपके पास लौटती हूँ अंजना जी, क्योंकि आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या चेंजेस देखनी है पहले और अब में? कितना अंतर है पॉलिटिक्स में? कितना मुश्किल रहा आपका ये दौर जब आपने इसको ज्वाइन किया, और अब में क्या अंतर महसूस करती हैं आप? मैं यही कहूँगी कि जब मैं आई थी इस पार्टी में, तब मुझे तो बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया था, क्योंकि तब जो हमारा चेयरमैन था उसने मैंने जो भी बोला कि जो करना है एथनिक माइनॉरिटी के लिए, उसने तब मेरी बात सुनी थी, और उसने मुझे बहुत सपोर्ट भी किया था। तो उस वजह से मैं बोलूँगी कि मैंने जब भी कुछ भी पार्टी को बोला तो उसने दे हैव एक्टेड अपॉन इट। तो आई वॉज क्वाइट लक्की विद दैट। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये सिर्फ कंजर्वेटिव पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज़ स्टिल अ प्रॉब्लम एज फार एज द सिलेक्शन इज़ कंसर्न। जब, और ये भी है कि मैं मानती हूँ कि जब भी किसी को भी जो भी सीट मिले वो अपने मेरिट्स पे मिलना चाहिए, कैपेबिलिटी से मिलना चाहिए, नहीं कि बिकॉज यू हैव टू फिल इतने परसेंट होने चाहिए एथनिक माइनॉरिटी, और ये रिलीजन से होने चाहिए या वो रिलीजन से होने चाहिए। ऐसा मैं बिल्कुल ही बिलीव नहीं करती हूँ। तो आई वुड से कि मेरी जर्नी तो अच्छी रही है इस पार्टी में, लेकिन जो बाहर के लोग होते हैं ना, पार्टी के बाहर के जो लोग होते हैं, वो आके दखल करते हैं कभी कभी। इस वजह से ना कभी प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन एज फार एज द पार्टी इज़ कंसर्न, वी हैव बीन वेरी लकी एज फार एज we the ethnic minorities are concerned in our party, that we have been given our dues wherever we have proved ourselves. कि मैंने हमेशा प्रूव किया था। जब मैं आई थी, एज मैंने बोला कि 3 लेबर काउंसिलर्स थे, तो जब मैंने फ़ाइट की वो सीट, तो मैंने एक सीट ली और 2 लेबर काउंसिलर्स रहे थे। फिर 2006 में मैंने फिर एक और कॉलीग को मेरे साथ वो भी चुन के आई, क्योंकि मैंने
ऐसा काम किया था, because I believed in passion. जब मैं whenever I was knocking the doors, when I was listening to the problems, I don't come from any political background, by the way. Nobody has ever been in politics. I have not even fought an election in the school or college or anything like that, because I come from a very humble background where my father was a teacher in Africa and my mother was a housewife, and all I have seen all my life is my mom and dad looking after people who came on the boat, on the ship from wherever, India or wherever to Dar es Salaam. They would stay with us for a few days and then onward journey to wherever. So all life my mom has looked after the guest, and that is what I have seen. And guests from all background and all religion has actually come and stayed with us. So that's how I have been brought up. So I don't see any difference between people and religion and things like that. So it was obviously difficult. But as far as election is concerned, I got in, and then my other colleague got in as well in 2006, because people had a similar problems to what I had. At the time I was fighting for a campaign for sixth form in Harrow, because we did not have a sixth form, and I always believed in sixth form education, that children should have a choice and not go to college. So I was really happy that whoever I spoke to believed in that as well. And then again, as I said, I was just an ordinary person asking people what their issues were, and then telling them what my issues are as well, and then that's how we connected. So they took me so well that everybody we were all on the same page. So all I had to do is just look after them once I got elected. जी जी परवीन, पहले और अपने जैसे कि बताया उन्होंने, आपको क्या लगता है इंडिया से बाहर आकर यहाँ पे जो पॉलिटिक्स में आना इजी है या मुश्किल है? देखिए मधु जी, किसी भी फील्ड में मेहनत तो करनी पड़ती है, बिल्कुल, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, या फिर शादी के बाद जो चेंज होता है, एक नए घर में आप जाते हो, तो संघर्ष हर जगह होता है, अपने अपने लेवल का अलग अलग संघर्ष होता है. सो नो डाउट कि पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना इट्स नॉट अ इजी जॉब. आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मेहनत नहीं है, आपको लोगों को कन्विंस करना पड़ता है कि आप अच्छे लीडर को चुन रहे हो, और जिसको आप चुन रहे हो वो आपका प्रतिनिधित्व करने वाला है और आपको रिप्रेजेंट करने वाला है, आपकी वॉइस बनने वाला है. कि जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, एरिया में प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रगल्स आप कर रहे हो, हम आपका सहयोग देंगे, और जितनी भी हमारे से बन पड़ेगा हम आप लोगों की सहायता करेंगे और हर चीज़ का लुक आफ्टर करेंगे. सिर्फ वादे नहीं, हमें वो काम करके दिखाना पड़ता है, और तभी लोग आपको आगे सपोर्ट करते हैं. और संघर्ष रहा ओबियसली कि स्पेशली वुमेन्स को, आपको पता है कि अपने बच्चे संभालना, फिर आप अगर वर्किंग वुमेन हैं तो आपको अपना ऑफिस वर्क भी संभालना, और ये एक बैलेंस करना आपको अपनी लाइफ में, परिवार में, और अपने फिर साथ में जब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रही हैं, वो भी वहाँ पे भी आपको अपना एक सपोर्टर तैयार करना, और आपको एक इस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार करना कि जहाँ पे, क्योंकि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जहाँ पे आप अकेले ही जाके बहुत मेहनत करो और आप जीत जाओगे. आपको एक क्रिएट करना पड़ता है एक अपना प्लेटफॉर्म, कि जहाँ पे आपके सपोर्टर आपको साथ चल के आपको सपोर्ट करे. और हमने भी वही ग्राउंड लेवल पे काम किया, और बहुत सपोर्टिव लोग भी मिले. और महिलाओं के लिए थोड़ा सा मुझे लगता है स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि उनको बैलेंस करना पड़ता है, अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करना है, फिर आपको अपने किचन में भी काम करना है, सब चीज़ें संभालनी है. अगर आपकी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है आपको, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रगल आपका फिर कम हो जाता है. एंड अगेन आई वुड से लाइक माई हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, माई बोथ किड्स आर वेरी सपोर्टिव. तो उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया, और वो स्ट्रगल जो बहुत ज़्यादा हो सकता था वो कहीं कम हो गया. और महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरत है कि उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जेंट्स को सिर्फ क्या है कि ब्रेड बटर एंड शेल्टर ये चीज़ अरेंज करनी है, लेकिन महिलाओं का क्या है कि आजकल वो कंधे से कंधा मिला के हर क्षेत्र में सहयोग कर रही हैं, लेकिन जो किचन वर्क है वो उसी के पल्ले बंधा रहता है, वो नहीं छूटता है. और कम और ज़्यादा ये जिम्मेवारी एक औरत के कंधों पर ही रहती है. और मुझे लगता है कि औरत को भगवान ने एक शक्ति के रूप में, जैसे कि आप कि इसका शो का नाम है नारी तू नारायणी,
तो ये बिल्कुल सही है और मैं इस चीज़ को हमेशा से मानती आई हूँ कि जब हम छोटे छोटे हम कन्या के रूप में होते हैं तभी हमारी पूजा की जाती है और वो पूजा करके आभास कराया जाता है, हमें रियलाइज कराया जाता है कि तुम एक देवी का रूप हो और तुम जो चाहो वो अचीव कर सकती हो। तुम ही, वही बात है कि लक्ष्मी हो, तुम ही काली हो और तुम ही दुर्गा हो। तो वाकई उस चीज़ में हम अगर अपने ऊपर विश्वास करें, बिलीव करें, तो हम वाकई साक्षात देवी का रूप हैं। बस ये है कि हमें अपनी शक्ति को पहचानना होता है, उसको मानना होता है, तो सब चीज़ें फिर आसान होती चली जाती हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। जी प्रवीण, बहुत अच्छा टॉपिक आपने उठाया महिलाओं के लिए, जहाँ तक बात की अभी प्रवीण ने बताया हमें। आपको क्या लगता है, क्या ये इसमें सच है कि महिलाओं को की जिम्मेदारियाँ और बढ़ जाती हैं? अगर आप किसी पोजीशन पे पहुँच जाते हैं तो भी आपकी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं होती और बढ़ती चली जाती हैं? आप इस चीज़ से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से, बिकॉज आई बिलीव दैट अ वुमन हैज़ गॉट मेनी मल्टीटास्किंग टू डू. And when a woman is out there doing not just one job, many jobs, she obviously has got many responsibilities as well at home. And in my case, it has been a struggle as well, because I have been a single parent. I have had a full-time job and I was a counselor as well. So I really had to struggle, and I had a lot of balancing act to do as well. And while doing this, your family do suffer a little bit, because they don't have that time that you would have spent with them if you weren't a counselor. So in my case, I would say it is absolutely true. And but also at the same time, only a woman has got that energy to do all this, because I think she has got this God gift that she can deal with all kind of issues that comes her way. She has got that power in her that she can do many things at the same time. So I personally feel that it is very, very true. And also women has to prove themselves more than a man has, and I still believe that we are living in a society, we are living in a community where a woman has to work harder than a man, and a woman has to kind of prove herself over and over again to achieve the same thing as a man could have achieved, maybe more easier than a woman has. Because don't forget that I know in our religion and in our upbringing, we are kind of worship when we are young as a god and goddesses. But I also believe that we are also not treated as equal in our society. But things are changing. Obviously, the generations are changing, and I'm really looking forward to that. I have brought up 2 boys, but I have got 2 beautiful granddaughters, and I want them to be like me, strong and powerful, and I'm sure that they will be. But you were talking about Narendra Modi ji and his visit to US. Yes. I would like to just touch upon that a little bit. I totally agree that being a prime minister who has been out and about in the world has definitely been good for us, the Indians who are living abroad, because I think that we are now valued more than we have been before. And maybe some people haven't realized this, but we haven't been valued. Our contribution has not been valued before as much as it is now. So I would say that Narendra Bhai's visit even to UK and US and everywhere else, wherever he has got, has made us proud. And I think we, the Indians, are very proud to know that India has got a very good and successful Prime Minister in India who is actually doing the same, and this is definitely a seva. What I am doing and how I think about my job is a seva, and nothing else, because if you're doing this for any other reason, and then I think you are in a wrong job, because I don't think you should. This is not something where you come and become a councillor or become an MP or whatever for your own goal in life. Then I don't know what would happen to you. But I have never come into politics to do what I wanted to do, because I struggled. I didn't tell you that part of my story, that when I came to
live in Harrow. I wanted my son to go to a particular school, and so I bought my house in an area where he would have got into that school, but he didn't actually. And so I was quite annoyed about it, that I took a big financial burden on myself and he did not get to the school that I wanted him to go to. Eventually he did after 2 years, but then his education was all over everywhere. But then I said to myself, I was ringing the council up. At the time it was a Labour council. I was trying to have an appointment with the admission manager, with the corporate director, and I would not get anything from anybody. And I said to myself, I'm here, I can write emails, I can make phone calls during the daytime, and I'm still not getting anywhere. So what would happen to all those people out there who hasn't got the facility to so who would be their voice? And that is why I decided that I will be their voice, and I will and do that job for them. And the second thing was, there was an issue with the Eastern Temple car park, where we were parking in Brent for many years, and all of a sudden the council decided to stop that car parking spaces for the temple and that was only for like few days in a year. It wasn't like the whole year. And I think we campaigned at the time and were in front of the Brent Council planning committee meetings and saying that this is not right. And again, I thought that was discrimination on the council part to do that. So I think there were issues that happened in my life and what I saw outside and everywhere that actually pushed me to become a counsellor. So I'm really a counsellor for people, and even now I do exactly the same. I care about people and I want to do what is best for people. यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए. ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं. बने रहिए हमारे साथ. What's your flavor? Tell me what's your flavor? Introducing the delicious new Caesar and Bacon Chicken One. What's your flavor? Our warm welcomes, cosy cuddles and afternoon nappers. They're always right by us. So we do right by them. With Bella and Duke raw pet food, we thank them. Not just a life well lived, a life well loved. Search Bella and Duke online and receive 50% off your first box, plus access to our 24-hour video vet service. Happiness is different things to different people. That's what happiness is. Etsy has home, style, gifts. Etsy has it. Glasses Direct. Trusted by over 2 million UK customers. Try 4 frames at home for 7 days for free. Each order is checked directly by our qualified opticians. Right now, get 2 pairs from £15 with lenses. And with free returns, no quibbles, you should go direct to glassesdirect.co.uk. If you're over 50, you can have the time of your life without worrying how your family will cope when your time is up. Post Office Over 50's life cover is simple and affordable, and from a name you know and trust. You're guaranteed acceptance if you're a UK resident aged 50 to 80. There are no health checks, and it starts from just £1.15 a week. Plus, you can get free 24/7 GP access with the health and wellbeing benefit. Come on, enjoy yourself. Safe in the knowledge Over 50's life cover will pay out money when you die, as a gift. Call our UK call centre now on 0800 169 1100 and choose your £100 gift card for amazon.co.uk, Tesco or M&S.
Get up and go. Millions of drivers are part of something special. They're road trip ready because they're covered by the UK's #1 breakdown service with unlimited call-outs and more expert patrols across the country to get them back on the road before they know it. They are members of the AA. Be with the best from £7.50 a month at theaa.com. The AA. Join today. Are you looking for a way to give your finances a much-needed boost? With an equity-release mortgage from Key, you could unlock a portion of your home's value tax-free and have the option to make reduced or no monthly repayments. So why not find out more by ordering our free expert guide on 0800 188 4822 or using our free calculator to see how much you could release. See how Key could help put more money back in your pocket. Key, for the life in later life. If you're staying in, win at staying in. Whether you're bossing working from home, streaming your favourite show, or gaming with your mates, get BT Broadband with a £20 money-back speed guarantee and Norton security to keep you protected online. For $31.99 a month on a 24-month contract. Switch to BT today and win at staying in. Why are we still reaching for period pads to deal with wee? Tena Discreet ultra-thin pads might look the same, but they're designed to work differently. They protect against leaks, odour and moisture, so you can stay dry for up to 12 hours. Upgrade your protection. Tena. Play Happy Tiger Bingo for the most awesome bingo winning experience with the chance to win $2,500. Co-op members save more with new member prices. So if you shop at Co-op and you're not a member, what are you waiting for? Join today and get £3 off your next shop when you spend £10. Download the Co-op app to sign up and save. जगवंदन अंजनी सुत बलधारी केसरी नंदन केहू जगवंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान जय हनुमान हजारों लोग हर रोज सुबह से रात तक कभी न कभी एमए टीवी जरूर देखते हैं. They might be your future customers. But you have to tell them about your products and services. Let's grow your business with MATV. Advertise, promote and market your product and services on MATV. Call MATV Sales on 07970 337036 or 0208 795 0026. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारी चर्चा चल रही थी पॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक पर और हमारे साथ अंशिता जी बैठी हैं और कंजर्वेटिव पार्टी से और हमारे साथ प्रवीण जी बैठी हैं लेबर पार्टी से। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ गई हैं स्मिता राज जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्मिता हमारे शो में। सबसे पहले आप अपने बारे में हमें बताएं और कैसे आपका पॉलिटिक्स में आना हुआ। थैंक यू सो मच। सॉरी मैं थोड़े से बिजी जगह पे हूँ तो थोड़ा सा बैकग्राउंड है, प्लीज़ डोंट माइंड बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए। हेलो एवरीवन, मैं लिबरल डेमोक्रेट काउंसलर हूँ। आई वाज फर्स्ट इलेक्टेड इन 2019 November 2019 and I have been honored to be elected again in 2023. Chelmsford City Council जो है it's a Liberal Democrat administration council where we are in administration and it's I would say I have been listening to such inspiring Anjana and Parveen, both of you are amazing. I have been myself, it's such a similar story and it's amazing to hear this. When I was in uni, I was always unanimously elected as class
in the in the youth council and things like that. But I never really took politics seriously. I always okay, I'm representing my classmates youth council or in the college university council. No one against me. So that was quite easy for me to kind of deal with the situation. I was always passionate, and I still am. But one passion is never dwindling. I want to help. I don't I don't see differences. I only see the similarities. I don't know whether it is fortunate or unfortunate. So for me, everyone is human first, and then comes the rest of the story. I don't know. I used to work like everyone else. I have my own struggle when I first came into this country. It's 25 years ago when I did, and I have done all the odd jobs, and then I was finally in recruitment. I did manager job and all those things. Then one day, because of I just thought I need to be looking after my children more. They needed more of my attention, and I left that job, and I suddenly had this opportunity to serve my community, because I'm one of those people who can't sit quiet at home. So I have to have some issues, some passion to take care of, something to feel that makes me feel alive when you're helping and serving your community. That's how I started. I started a non-profit organization where I saw the gap in the society, where no one was helping Asian women authors and artists, or the Asian community, or the people with learning disabilities. And I started from there. I started helping them. I started looking after them from an arts perspective, from a literature perspective, from a mental health perspective. And since then, my journey has started from there. And it's my father who always said, because I've been selflessly serving the community, my father said, you are doing this, why don't you do some more constructive serving the community? There is more constructive way to do this, what you are already doing for past 10 years. And I said, what's that? And he said, oh, why don't you join politics, stand as a candidate. That way you would be able to help people more, tell them, guide them more. And I also, while I was serving in the community just through wine, I just realized that communities, people don't know what is happening, where to go in the council, who to speak to when they are in trouble, if the neighbor is giving them problems, where to go. अपने neighbors सबको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कोई planning issues फंसा हुआ है कहीं, you don't know who to go to. And it's sometimes people know that council has all these things, but they don't know. They want to talk to someone who is personal, who can talk. And for that, my father kind of pushed me to it, because he's like a guardian angel. And he said, well, why don't you do this? And things fell the moment I decided. जिस दिन मैंने ये decide किया कि मैं अच्छा ठीक है, I will try this too. I'll take that step, the first step. Started falling into places, and somehow I ended up joining Liberal Democrats. And the reason all the councillors that I was, because I was in lots of events for Hindu Society. That is another charity that I run in Chelmsford. स्मिता, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगी क्योंकि पीछे से हमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। अब मैं लौटती हूँ अपने ये दो गेस्ट के पास में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस शो में आने के लिए। और बहुत जी, हमारे साथ अंजना जी बैठी हैं और हमारे साथ प्रवीण बैठी हैं। अंजना जी से बहुत ज़रूरी बातचीत चल रही थी और उन्होंने हमें बताया कि वर्क प्लेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन की बात होती है। क्या लगता है प्रवीण आपको कि क्या ये पॉलिटिक्स में भी होता है? देखो, मोर एंड लेस ये तो हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। और ये एक आई वुड से इट्स नॉट समथिंग लाइक वेरी कुछ स्पेशल है।
आप कहीं भी चले जाएं, मेरे ख्याल से खुद के कंट्री में भी आप थोड़ा बहुत देखने को आपको मिल जाएगा, कलर के बेस पे, रिलीजन के बेस पे, इन चीज़ों पे। तो ये हर जगह होता है। ओबियसली आप एक अनजान कंट्री में हो और एक आपने अपनी अलग पहचान बनाई है और आप इन सब चीज़ों का सामना ज़रूर करना पड़ता है, कोई भी फील्ड हो। So I believe that I cannot ignore that yes, you don't face any problem and you don't face racism or discriminations. Yes, you do, more or less. और ये डिपेंड करता है कि अगर आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं और आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को मनवा सकते हो, वो आपके अंदर अगर क्षमता है, वो हुनर है, तो फिर आपको कम फेस करना पड़ता है। अदरवाइज लाइक बहुत सारे इंटेलिजेंट लोग होते हैं एंड दे आर वेरी एक्सपर्ट इन देयर फील्ड, बट स्टिल दे हैव टू गो थ्रू too much struggle and racism and what I would say that discriminations. Yes, they have to, but that's why in this country they have to follow equality and diversity policy, and everywhere they have to have that policy. But still क्योंकि जैसे being an educationist, we also have that policy and we have to give the equal opportunities to everyone. बस आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं, तो आप कहाँ पे क्या, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हो। देन इफ़ यू आर अवेयर अबाउट देन पीपल कैन नॉट डू दैट विद यू। दिस इज़ व्हाट आई थिंक आई हैव सीन। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ और शिक्षा और प्रशिक्षण में इसमें अभी रिसेंटली मुझे अवार्ड भी मिला है इंडिया हाई कमीशन लंदन से। तो मैं आगे भी ये कहती हूँ कि जब आप एजुकेशन में हो और आप आगे भी लोगों को एजुकेट कर रहे हो कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो आपके साथ आपके राइट्स हैं, पॉलिसीज हैं जो आपके फेवर के लिए बनाई गई और आपके हित में बनाई गई हैं। यू कैन यूज दैट। सो इफ यू आर अवेयर अबाउट इट देन आई थिंक it's still you are in safe place. This is what I would say. And obviously मधु जी, ये सब चीज़ें तो आप नेचुरल, मेरे को लगता है कि नेचुरल ही आप कहीं भी चले जाओ ये चीज़ें तो फेस करनी है। एक औरत के लिए देखो ये भी एक स्ट्रगल, एक अलग स्ट्रगल होता है कि एक नए देश में आके वहाँ के लैंग्वेज, वहाँ का वेदर और वहाँ के संस्कार, संस्कृति, सब चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो मेंटली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो देन व्हाट यू कैन डू दैट, व्हाट्स योर राइट, तो यू हैव टू फाइट फॉर इट। जी जी बिल्कुल प्रवीण, बहुत अच्छी बात बताई आपने। अंजना जी, जैसे कि प्रवीण जी ने बताया कि अगर आपके पास वो राइट्स आपको पता हैं कि आप उसको रोक सकती हैं, बट उतने बड़े लेवल पे नहीं होता है। कई जगह पर आप देखिए वर्क प्लेस में बहुत छोटे लेवल पर होता है, बट आप उस चीज़ को फील कर सकती हैं, कई बार उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा होता है और होता रहेगा। एंड बीइंग हियर फॉर नियरली 47 years, when we came here first, we have faced a lot of discrimination, lot of racism. Even while walking on the street, people used to call us pakis, not knowing the difference. Now obviously people are much more educated, and thanks to all those people who had been here before I came as well, that the hard work that they have put in, that we are in a much better and stronger place that we are in, is what I would like to say here first. Doesn't matter how good or well background you've come from, but I think it's the people who actually done all that work for you. So I would definitely say that I have faced discrimination at my workplace, and obviously there are a lot of rules and regulations there, but they're not easy to access, and sometimes you have to think about yourself, and especially if you are a breadwinner of the house, you cannot speak up. Doesn't matter how much you want to do that, you just cannot speak up. And I have been in that place many a times, but then time came when my son was old enough and started working, is when I actually started speaking up about the discrimination. And once I spoke up, I got where I wanted to be in my organization, because I had obviously set a goal for me, and it wasn't that I was more than capable to do the job, that I should have got it many years back. But anyway, at the end I did get it, because I had a bit of a stability in my house, that at least my son was ready then to take over the mortgage and the bills if anything happened to me or my job. So it's not that easy to speak up and even to follow. Even now we see this
in our local councils as well. There are many employees who are there but will not do whistleblowing because they are worried about their jobs. So whistleblowing, fighting discrimination is not as easy and simple to do. So I won't beat around the bush and say that it is easy and if you're capable you can do it, because I think everyone is capable of fighting. But I would just say one thing, that discrimination is everywhere. And we actually discriminate within our own families as well. Even now, more or less, maybe some family don't, but if you have a boy and if you have a girl, you have different set of rules for them. And it's happening everywhere. Even here it happens as well, that you would, even though you don't want to admit it, but you do say to your daughters that you're more protective over your daughters than over your sons. So discrimination starts from home, and so we see it everywhere. So if I see discrimination here in this country, I'm not saying that it is only here in this country, it is happening everywhere, all over the world. So that's something that I kind of accept it, but then I have my own way of fighting those discrimination, those inequalities, which I do all the time. And by doing that, you can achieve what you want to achieve. But sometimes, as I said, it's not as easy to do what you want to do. And that is why I would say that, I mean, even I see it now as well within my own council. Sometimes I see things and I am in a place where I can actually fight for other people, and I do that. But maybe those people may not be able to fight their battle on their own, because, as I said, everybody is worried about their job. So this is happening everywhere. But I would say one thing, that if I was in India as a single parent, not having any privileges or not coming from any kind of good background, a very humble background. A father was a teacher, a retired teacher afterwards. I don't think I would have got this opportunity what I have got in this country. So I would say one thing, that I am very grateful to this country that I have achieved what I have achieved, which I don't think I have achieved anywhere. But then I know how to do things now much better than I would have many years back when I was working. But then also, whenever I set my goals in life, I have achieved all of them. So I'm really blessed, because of I've got blessings from my mother, from my father, and I'm sure he must be very proud of me, looking down upon me, what I have achieved. And my guru and my God. जी प्रवीण, आप एक हाउसवाइफ भी रही हैं शुरू में, और फिर आप एजुकेशन में आई, अब आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में आ रही हैं. कितना पावरफुल महसूस करती हैं अब आप जब अचीव कर चुकी हैं इन चीज़ों को? तो मधु जी, इस पे मैं कहना चाहूँगी कि मैं शुरू से ही अपने आप को बहुत पावरफुल फील करती रही हूँ, और वो मेरी माँ ने मुझे रियलाइज़ करा. मेरी मम्मी ने हमेशा ही मुझे, जैसे मेरे 2 भाई हैं और एक मैं सबसे छोटी हूँ लड़की, तो मेरी मम्मी ने मुझे हमेशा ही लड़कों की तरह इक्वल राइट्स दिए और ऐसे ही ट्रीट किया. कभी किसी चीज़ में कोई कमी नहीं आने दी, ना एजुकेशन में, ना पहनावे में, ना खाने पीने में, और किसी भी चीज़ में. तो मुझे वो कभी रियलाइज़ ही नहीं होने दिया कि मैं किसी से कम हूँ. तो मैंने हमेशा ही अपने आप को पावरफुल समझा है, और इसीलिए शायद बहुत कुछ जो अचीव कर पाए, कि जैसे अभी अंजना जी ने कहा उनको 47 ईयर्स हो गए हैं, और स्मिता जी ने शायद कहा था कि 25 ईयर्स, और मुझे अभी 15 साल भी नहीं हुए हैं. तो मुझे इन दोनों बहनों से सुनने के बाद अभी और ये लगता है कि आई एम रियली फॉर्चुनेट. और अभी तो कुछ भी नहीं है, और आगे मेरे ख्याल से इतने साल जब मुझे हो जाएंगे तो शायद भगवान की कृपा से मैं बहुत कुछ हासिल कर पाऊंगी लाइफ में. यही एक और आज मुझे मोटिवेशन मिल गया, एक पॉजिटिव थिंग्स मुझे सुनने को मिली है मेरे लिए, कि मैं आगे लाइफ में, इसका मतलब बहुत कुछ आगे बहुत कुछ अचीव करने वाली हूँ. और बचपन से ही जैसे आई एम वेल एजुकेटेड, लाइक आई एम डबल मास्टर्स, एमफिल, एंड इस कंट्री में भी आने के बाद मैंने फिर से एजुकेशन ली. कुछ लोग अपने दिमाग में ये चीज़ बिठा लेते हैं नेगेटिव, कि वी आर माइग्रेंट्स एंड हमें कोई भी इक्वल नहीं ट्रीट करेगा, वी विल बी लाइक फेसिंग प्रॉब्लम्स, एंड हमें डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, हमें रेसिस्ट लोग मिलते हैं, हमें ऐसे बोलते हैं. यस, आपके अभी जैसे अंजना जी ने बताया कि हम अपने घर में अपने 2 बच्चों में, लड़का और लड़की में भी डिफरेंस करते हैं, हम खुद करते हैं. तो अब आप इसको फिर रेसिज्म को, डिस्क्रिमिनेशन को कुछ भी कहो, लेकिन ये आप अपने ही कंट्री छोड़ो, आप अपने घर में खुद करते हो. तो ये थोड़ा और ज़्यादा कहीं ना कहीं, देखो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी, आती रहेंगी, लेकिन आपको इनसे उभरने का तरीका आना चाहिए कि आप कैसे उभर के इन चीज़ों से कम ओवर कर सकते हो और कैसे आ रहे हो. एंड आई बिलीव लाइक इफ यू आर वेल एजुकेटेड, then you can bring the positive change in society. A very famous quote
education is the strongest weapon in the world where you can bring the change through that, and I entirely agree with this quote कि अगर आप, और आगे भी मेरा यही है कि अगर आप एजुकेट करते हो अपने आप को, अपने बच्चों को, एजुकेशन इज अ पावरफुल वेपन। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, जैसे कोविड आया, लोगों के बड़े अच्छे खासे बिजनेस धरे के धरे रह गए, सब कुछ चला गया, लेकिन जो वेल एजुकेटेड थे वो फिर से जीरो से स्टार्ट करके फिर से हीरो बन सकते हैं और बने हैं। तो यही एक एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है कि मैं आगे यही कहना चाहूँगी कि एजुकेट करो अपने बच्चों को, और किसी को भी अगर आप पावरफुल बनाना चाहते तो उनको पैसे से मदद करके या किसी और चीज़ से मदद करके बजाय वो आप उन चीज़ों से मदद करो। अगर आपको उनको परमानेंटली उनको हेल्प करना है तो उनको एजुकेशन दो, एजुकेट करो, उनको कोई ऐसी स्किल सिखाओ जिसके बेस पे वो कभी भी कहीं भी जाए, वर्ल्ड के किसी कोने में चले जाएं, वो कभी भी भूखे ना मरे, कभी भी उनको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, वो कहीं भी अपनी ज़िंदगी फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करके हीरो बन सकते हैं। जी जी। अंजना जी, आप बहुत लंबे टाइम से पॉलिटिक्स में हैं, अगर नई जनरेशन कोई पॉलिटिक्स में आना चाहती है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? I would say to each and every one of them who are out there who is interested in becoming a politician, whether it is a councillor, whether it is an MP, whether it is being a GLA member or whatever you decide to do, one thing you must have in mind is service to human being. Because if you're coming for any other reason and not to serve the people, to serve the residents, then I think you will not be able to do that job for long. Because sometimes, I mean, you can carry on for a little while, but I think people will realize that, because as far as the system is concerned, there is an election every 4 years or every 5 years, and people do know who actually are working for them and who are not working for them. So, but there is a place for each and every one of you to come forward, and I would like to encourage especially women and young people and ethnic minorities to come forward and be part of this, because it is important. The representation is absolutely important, but sometimes, as I said, people come for wrong reasons. When you are here, you actually are coming to represent your own constituency, your own ward, or your borough, and that should be your motto, and that should be the most important thing that you are there for. And if you remember that, and if you want to do that, then this is the place for you. Because I personally feel that having a mandate and be elected, and if you're in power, if your party is in administration, you can move mountains, and I know because we've done it. जी प्रवीण जी, जैसे कि आप देख रही हैं आपका बेटा भी इस फील्ड में आ रहा है, तो युवा पीढ़ी में आप कितना क्रेज़ देखती हैं पॉलिटिक्स को लेकर? जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बेटा बीएससी सेकेंड ईयर के अभी एग्ज़ाम्स दिए हैं, किंग्स कॉलेज में वो पढ़ता है, तो मैंने उसको थोड़ा सा मोटिवेट किया। ओब्वियसली आपके अपने बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो खुद ही अपना फैसला करते हैं कि मुझे लाइफ में ये करना है वो बनना, जैसे कि छोटा एंटायरली डिफरेंट है बड़े से, वो हमेशा कहते हैं कि इट्स माई लाइफ एंड आई विल चूज़ व्हाट आई विल बी एंड व्हाट आई वांट टू डू इट। लेकिन बड़ा हमेशा सलाह लेता है, एडवाइस लेता है कि मम्मी मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट विल बी बेस्ट फॉर मी, because you got experience in your life, so you can suggest me the better option, so what I should be doing in life. तो उसको जैसे यही एडवाइस किया था कि if you want to bring change and if you want to do something for community, then you have to be a part of the policy. प्लेटफॉर्म कोई भी चुनो, जो भी आपको मिलता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन वहाँ से आप अपनी एक वॉइस आप ला सकते हो। लेकिन आपको कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ज़रूर चूज़ करनी चाहिए। वो आपके ऊपर है कि आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कौन सी पार्टी की पॉलिसीज़ से आप सहमत हैं। लेकिन यूथ को यही मेरा एक मैसेज है कि सबको करना चाहिए, क्योंकि घर बैठकर कंप्लेंट करना सिस्टम के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इट्स वेरी ईजी, बट यू हैव टू कम फॉरवर्ड, यू हैव टू डू सम एफर्ट्स फॉर इट। जब आप एफर्ट्स करते हो तो आप सिर्फ अपने लिए चेंज नहीं लाते हो, आप पूरी कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए और फिर देश के लिए, क्योंकि कल को अगर हम एमपी बनते हैं तो फिर हम और बड़े स्केल पे चेंज ला सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट विल बी आवर नेक्स्ट आई थिंक टारगेट। तो वही है कि अभी वो जस्ट 20 साल का है और आज काउंसलर है,
तो अभी लोग उसको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, क्योंकि वो थ्योरेटिकल पढ़ भी रहा है और उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आगे बहुत अच्छा कर पाएगा और लोगों का प्यार और सहयोग जैसे अब उसको मिला आगे और ज़्यादा मिलेगा। और हमारे आने वाले टाइम में वो दिन मुझे लगता नहीं कि मुश्किल होगा कि वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर होगा इस कंट्री का। जी जी, बहुत अच्छी बातें बताई आपने हमें प्रवीण जी और अर्चना जी। आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत सारी जानकारी मुझे मिली इस शो के माध्यम से। बहुत कुछ हमने दर्शकों को बताया कैसे पॉलिटिक्स में एक महिला अपने आप को इस्टेब्लिश करती है। ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं आप के तौर पे, काउंसलर बनकर आपने दिखाया, देश से बाहर रहकर आपने नाम बहुत ऊंचा किया, अपने देश का ही नहीं बल्कि हम सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो से जुड़ने के लिए। फिर अगले महीने मुलाकात होगी इसी प्लेटफॉर्म पे। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।